Good morning, everyone. Good morning. How are you all? Okay, please check audio video. Is it clear? Audio video. Is it clear? चलिए, let's start today's session. Today, uh, we are going to solve some more question from the most repeated MCQs, and I hope you have downloaded this PDF. It is available on the most repeated course. ठीक है, most repeated MCQ course. So what you have to do, you have to just download the app और उसमें आप open करेंगे store section. In the store section you will get the course practice session on computer science. Even though it is displaying that you have to pay 200 rupees, but don't pay any amount. Directly go to the ठीक है, directly go to the content section, and from that content section you can download the PDF material, and you can also watch the classes that I have provided previously. Correct? So free classes of recording, free recording of classes and free content of classes available. What is the step? ठीक है, just open the app, go to store, in store open the course practice session on computer science, most repeated MCQs, then open content section, and in content section you will have all this material. So here I am conducting practice session every Monday, Wednesday and Friday at 11 a.m. and every Sunday I'm conducting the weekly mock test. So this week and this weekend or this Sunday we will have mock test on discrete mathematics. So be ready with that one. Mock test timing is 7 p.m. The class recording of mock test is also available in this course. ठीक है, so use the access the same content, and you can also access the recording of weekly free mock test series that is on computer science. Now today we have a special offer is running, that is Akshay Tritiya offer. So here you can enroll for the complete recorded course in just rupees 749 for the 1 month subscription. So here you will get 24 cross 7 doubt clarification PDF material, recorded topic wise practice session, net previous year question, gate previous year, rank booster mock series, and the validity will be 1 month for the 749 rupees. Correct? So yes, you can join, and I have also launched the rank booster mock test series that have been started from 1st of May, but still you can attempt all the mock tests that I have scheduled in this mock test series. So before your examination, analyze your preparation with the help of rank booster mock test series, and it will also help you to clear your concept, because I have also given the explanation of the question, है ना, and you can also ask in the doubt session. If you want, I can schedule the doubt session यदि आपको बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है तो. चलिए, so this is about the my courses.
let's start today's session. So here is the first question for you. What is the time complexity of Bellman-Ford single source shortest path algorithm on a complete graph? You can write down your answer into the comment box. ठीक है? So what is the correct answer? What is the time complexity of Bellman-Ford single source? चलिए पोल ही स्टार्ट कर देती हूँ, है ना? Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford algorithm. Yes, very good. Option option C is the correct answer. The complexity of Bellman-Ford algorithm for the single shortest path, it is given by order of n cube. ठीक है, ये क्या होगा? Order of n cube. देखिए, time complexity of Bellman-Ford algorithm is given by theta of number of vertices into number of edges, where v क्या होगा? Number of vertices and e क्या होगा? Number of edges. Now they are saying कि here we have, है ना, complexity of Bellman-Ford single shortest path algorithm on a complete graph. So obviously हमने अभी जो हम complexity read करते हैं वो क्या होती है? वो होती है order of b into e, है ना? Order of b into e. Now here are the n vertices and this is the complete graph, and if it is the complete graph, so number of edges will be, number of edges भी क्या हो जाएगा? If the graph is complete graph, so number of edges, the value of e, it will become v square. So that's why जब आप overall complexity देखेंगे, so n into n square, that will become theta of n cube. ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी. विच वन ऑफ द, देखिए, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे. ई लॉग वी, ई इंटू वी या वी इंटू ई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट सिंस कंप्लीट ग्राफ गिवन है, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज वी स्क्वायर इंटू, सॉरी, एन स्क्वायर इंटू एन, दैट इज एन क्यूब. Which one of the following expression does not represent exclusive nor eggs of x and y? Exclusive nor, exclusive nor. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोल, बट
यस, वेरी गुड। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, वी नो दैट, ना ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा। वी नो दैट दैट एक्सक्लूसिव नॉर का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, इट इज, ठीक है, एक्स नॉर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि complement of exclusive or a complement of exclusive or is also equal to XNOR, ठीक है, it is also equal to XNOR. Now see, I have to explain, sorry, in the class I have told you that if we have single complemented value is present in exclusive or, ठीक है, सिंगल कॉम्प्लीमेंटेड, सपोज y इज कॉम्प्लीमेंटेड, तब भी किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सनॉर के। सपोज x इज कॉम्प्लीमेंटेड, है ना, ऑड नंबर ऑफ वैल्यू, ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आर प्रेजेंट, देन इट विल बी इक्वल टू x naught, ठीक है। if we have odd number of complement are present, then it will be equivalent to x naught. vice versa is also true, ठीक है, कि यदि आपका x naught है and there is odd number of complement, odd number of complement are there, then it will be equal to exclusive or. so here you can see, here we have odd number of complement, so ये बन जाएगा x naught. here we have odd number of complement, so it will become XNOR. But here we have even number of complement. So in the case of even number of complement, XOR will remain XOR. ठीक है, ये XOR ही रहता है. Only it is true for the odd number of complement. So that's why option D it is correct answer. Solve this one. This is the question based on the probability, you can say, है ना? So we can discuss here. It is based on the probability. So देखिए how to solve this one, ठीक है, how to solve. Here we have, it is the question that is based on the probability. Consider the undirected random graph with 8 vertices. Total vertices are the 8 vertices. The probability that there is an edge between the pair of vertices, it is 1 by 2. मतलब probability क्या है, half है, that there is an edge between 1 and 2 or between 2 and 3, it is 1 by 2, meaning is that there may be edge,
है ना, यहाँ पर एज हो भी सकती है और नहीं भी, दैट्स व्हाई इट इज हाफ. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड साइकिल ऑफ लेंथ 3? आपको अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं. अनऑर्डर्ड मीन्स देयर विल बी नो डायरेक्टेड एजेस एंड द लेंथ ऑफ साइकिल इट शुड बी 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको क्लियर है दैट if to make the cycle of length 3, how many vertices are required to make a cycle of length 3? How many vertices are required? Obviously 3 vertices are required, है ना. 3 vertices are required, then only cycle is possible. Then we have to find out the probability, है ना, whether there is age between 1 and 2, there is an age between 2 and 3, and there is an age between 2 3 and 1 and 3. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 1/2 1/2 है. So now in the complete graph with 8 vertices, now in the complete graph with 8 vertices, what is expected number of unordered cycle of length of 3 is possible? ठीक है, ये चीज आपको कैलकुलेट करना है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले for the cycle of length 3, it required 3 vertices. Now, out of 8, I can select any of the 3 vertices? Yes or no? I can select. I have 8 vertices. I can select any of the 3 vertices to make the cycle. Any of the 3 vertices to make the cycle. So, how many different ways are possible? In how many different way we can select the 3 vertices out of 8? So all the vertices are similar. That's why it is the problem of combination. 8C3. 8C3 को solve करेंगे. You will get total 56 ways are possible. है ना, ये आपको selection way मिल गया, in which you can select the different vertices to make a cycle. You can select the different vertices to make a cycle. Total how many ways? 56 ways. अब what is the expected number of cycles are possible, मतलब what is the probability? So we know that कि here is given probability of 3 vertices form a cycle if and only if there is age between all 3 vertices. और इसकी possibility क्या है? 1/2 1/2 and 1/2. तो total probability क्या बनेगी? 1/8. The probability of age between vertices 1 and 2, the probability of age between 2 and 3, and the probability between 1 and 3, 1/2 1/2 1/2, that will give you 1/8 is the total probability that the graph will form the the there is a cycle between 3 vertices, है ना. there is cycle, इसका probability क्या हो गया? 1/8. now so expected number of cycle 56, because total 56 ways में आप cycle create कर सकते हो, but probability is only 1/8. तो expected number of cycle कितना हो जाएगा? 7. ठीक है, expected number of cycle होगा 7. सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हो चुका है, बस थोड़ा सा फॉर्मुलेशन चेंज होता है. नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसिस इज इवन एंड सम ऑफ, कल भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कहीं, आई थिंक प्रैक्टिस सेशन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने ये सॉल्व किया है ना. Yes, very good. ठीक है. Now see,
Both statement are correct. Both statement. For the given undirected graph, number of vertices with odd degree, it will be always even, because the sum of degree of all vertices is even, है ना. So ये देखिए, if this is the vertices with degree, ठीक है, this is the graph like this one. So number of vertices with odd degree, it will be even, because here we have one and two vertices are there with even degree, and these are the two with odd डिग्री, with even डिग्री. तो जब आप सम परफॉर्म करेंगे, so 3 + 3 will be 6, that is a even number. 2 + 2 4, that is a even number. And 6 + 4 is 10, that is also a even number. So number of odd degree vertices is always even. Both statement are correct. Both statement are correct. Solve this question. The logical translation for the following statement: none of my friend are perfect. This is the gate question, but it has been also asked in UGC net 2020 समथिंग में ये पूछा, रिपीट कर चुके हैं. None of my friend are perfect. What is the logical translation of the following statement? None of my friend. Okay, let me start poll. It will be of 30 second only, है ना. 30 second, because very simple question. So 30 second for this question. हाँ जी, वेरी गुड. ठीक है. नन ऑफ माई फ्रेंड. देखिए, ये क्या बोलना चाह रहे हैं इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है. देयर एग्जिस्ट एफ एक्स. देयर एग्जिस्ट मतलब सम ऑफ, या सम ऑफ माई फ्रेंड, मतलब कुछ लोग मेरे फ्रेंड हैं. एंड दे आर नॉट परफेक्ट, तो यहाँ तो सम ऑफ बना. नन ऑफ मतलब ऑल की बात हो रही है. नन ऑफ मतलब, नन ऑफ मीन्स ऑल ऑफ माई फ्रेंड आर नॉट परफेक्ट. देयर एग्जिस्ट मीन्स सम ऑफ माई फ्रेंड. सम, यहाँ मीनिंग क्या है? सम ऑफ my friend are not my friend and perfect. Some of are not my friend and not are perfect. Some of not my friend and not perfect. But here you can see they are writing negation of their exist, means for all. They are my friend and are perfect. ठीक है, are perfect. So yes, the correct option is D. Correct option क्या होगा? It is D. Consider the following sequence of micro operation, and which one of the following is a possible operation performed by this sequence. CSO का क्वेश्चन है. ठीक है. CSO, अगेन आई विल गिव यू 30 second फॉर दिस. चलो 1 minute ले लीजिए. सॉल्व दिस वन. Consider the following sequence of micro operation. We have program counter.
ठीक है, वी हैव, yes, consider the following sequence of micro operation. We are loading something from PC, that is program counter register. Program counter register to the MBR. Now, what is MBR? MBR is known as the memory buffer register. It is called the memory buffer register, or sometime it is also known as the memory data register. Memory data register. So we are transferring obviously what PC is holding. Then MAR, memory address register, we are loading the value of x, and in PC we have the value of y. Now memory have the memory में आप store कर रहे हो the content of memory MBR. MBR. So what actually we are doing, ठीक है, हम actually यहाँ पर कर क्या रहे हैं? Yes, very good. ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, आपने क्या बोला? It is interrupt cycle. Interrupt cycle, what actually PC is containing the address of the next instruction that should be executed. Address of next instruction आपका कहाँ स्टोर होता है? In the program counter. So when suddenly an interrupt has occurred, so current value of PC, it should be transferred to the data register or somewhere else, है ना, ये आपने लोड करके रखा. Now in MAR, ठीक है, in MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो भी आपका सेव्ड एड्रेस है उसको आपने लोड किया, ठीक है, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, सर्विस दोगे, एंड देन प्रोग्राम काउंटर हैज द नेक्स्ट अनदर एड्रेस, रूटीन एड्रेस जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो टू प्रोवाइड द सर्विस टू द इंटरप्ट. इट इज कॉल्ड द इंटरप्टेड सर्विस रूटीन. इंटरप्टेड सर्विस रूटीन का एड्रेस कहाँ चला जाएगा? प्रोग्राम काउंटर में. एंड वंस द टास्क हैज बीन डन, देन अगेन वी विल लोड द कंटेंट फ्रॉम एमबीआर. जो आपने प्रोग्राम जो आप एग्जीक्यूट कर रहे थे उसको आपने हॉल्ट किया है. सो इट इज इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस, है ना, ये इंटरप्ट सर्विस का साइकिल है. माय सजेशन कि आप, you should also remember the instruction fetch cycle, operand fetch, conditional. So instruction fetch जरूर याद रखिए, है ना, instruction fetch cycle, execution cycle, what is the sequence of execution cycle. Now solve this question. This is from data structure. Here you have to find out the complexity of this function, है ना. सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन. What is the return value of the function? Return value of the function.
Now how to solve this question? देखिए, we have to understand in every step, ठीक है, in every step what is the cost, ना, how many time this loop is working, ठीक है, this loop is working या k value is changing. So for example, for the first time when we are talking about the outer loop, so how many time this outer loop will execute, ठीक है, outer loop कितने बार execute होगा. So obviously you can see कि the value of outer loop, suppose यहाँ value है 4 and value is 4, so it is starting from 2, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, दैट इज n by 4, है ना. तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका एग्जीक्यूशन होगा, इट विल बी n by 2 टाइम्स, है ना. आपका जो इनर आउटर लूप है, हाउ मेनी टाइम इट विल एग्जीक्यूट फॉर n by 2 टाइम. नाउ इनर लूप, अब इनर लूप में आप जब वर्किंग करेंगे, ठीक है, सो फॉर हाउ मेनी टाइम इट विल एग्जीक्यूट. तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब भी आपका जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाइड विद 2. तो मतलब इसका मीनिंग है log 2 एन टाइम आपका जो लूप वर्क करेगा, इट विल वर्क फॉर log 2 एन टाइम. सपोज यदि यहाँ इंक्रीमेंट होता j इज इक्वल टू j इंटू 6 से, तो ये फॉर्मूला हो जाता है log 6n, है ना. ये कितने टाइम लूप वर्क करेगा, इट विल वर्क फॉर द log 2n, बिकॉज इंक्रीमेंटेड इज जस्ट बाय डबल वैल्यू, डबल से आप इंक्रीमेंट कर दे रहे हो for the j value, that's why it will execute for the login 2 time. Now see, k के लिए क्या बोल रहे हैं. Now k value is every time, a n by 2 time आपका loop work करेगा, this will work for the login time, and every time k is going to be changed, और return भी क्या हो रहा है, k value. So whatever it is starting from theta equal to 0, and we will have, ठीक है, देखिए, k इन ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन में आपकी के की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है. यस, के का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. और एक चीज और समझिएगा कि लाइक यदि फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन में आपका क्या होगा, n by 2 प्लस वट एवर वैल्यू ऑफ n लॉग मल्टीप्लाइड विद log 2n बनेगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट इटरेशन, फॉर सेकेंड इटरेशन, फॉर थर्ड इटरेशन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k, है ना, क्योंकि इतने टाइम आपका n एग्जीक्यूट हो रहा है, बट एवरी टाइम इट इज एडिंग द वैल्यू n बाय 2, है ना. हर बार n बाय 2 आपका क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है. तो कितने टाइम आपका n बाय 2 ऐड होगा, इट विल बी n बाय 2 इंटू लॉग एन टाइम, है ना, n बाय 2 इंटू लॉग एन टाइम. तो आप अगेन n बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, this number of time your n by 2 is going to be add on here. So now the complexity will become n square log n square log n divided by 4, है ना. ये क्या होगा, n square by 4 log n. Now we can ignore the constant value, so complexity will become n square log n. complexity क्या बन जाएगा, n square log n, ठीक है. फॉर ईच इटरेशन k is incremented by n by 2. First outer loop will work for the uh, n by 2 time, and inner loop will be for log n time, and the value will going to be increment every time by n by 2. So n by 2 into log n into n by 2, because every time the value is going to be increment by n by 2, so it will give you n square upon 4 log n. I can ignore the constant value, so it will be n square log n is the value that is written here, ठीक है, जिसको हम रिटर्न करेंगे. So everyone, today's an special offer is running where you can enroll in the complete course in just rupees 749 for the with 1 month subscription. So here you will get all these material for the 1 month validity, and the charges that you have to pay, it is just 749. It is Akshay Tritiya offer. So just you can enroll, है ना, कोई कूपन नहीं लगाना है. चलिए, solve this question. Consider the following language. Consider following language.
क्या आंसर होगा? देखिए, हियर वी हैव order of p, oh sorry, 0 power p, 1 power q and 0 power r, p q r, it is greater than equal to 0. मतलब there is no relation between 0 1 and 0, there is no relation, है ना, यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये लैंग्वेज क्या बनेगी? L1 आपका क्या बनेगा? रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, रेगुलर होगी या कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। नाउ सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन, ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला गया कि 0 पावर p 1 पावर q, 0 पावर p 1 पावर q एंड 0 पावर r, ठीक है, इट शुड बी पी क्यू आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगेन ऐसे आप देख रहे हैं तो कोई भी रिलेशन नहीं, बट दे आर सेइंग p शुड नॉट बी इक्वल टू r, p should not be equal to r, meaning is that कि आप यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो, here you are doing the comparison, since कंपैरिजन हो रहा है, that's my that means कि ये आपकी CFL है, ये आपकी CFL है, but in the first language there is no comparison, 0 is independent from 1 is independent, 0 is independent, so we can say कि any number of 0 followed by any number of 1 followed by any number of 0, so this is what ये आपकी रेगुलर है, ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन आ गया p और q r के बीच में, इवन दो दे आर सेइंग नॉट इक्वल टू बोले, नॉट इक्वल टू बोले, ग्रेटर देन इक्वल टू बोले, लेस देन इक्वल टू बोले, वॉट एवर इट विल बी, इट इज द कंपैरिजन, इट इज कंपैरिजन, so it will be a CFL. So L2 is context free, true. Intersection of L1 and L2, intersection of regular with CFL, it is CFL. Intersection with regular, it is CFL. Complement of L2 is recursive, ठीक है, complement of L2, what we say कि L2 is CFL and complement of CFL, it may or may not be, may or may not be CFL, so we say कि ये recursive होता है, in next higher level पर हम चले जाते हैं, that is recursive, so it is also true. Complement of L1 is context free but not regular. L1 is regular, L1 is regular, so complement of regular is also regular. So that's why this statement is false. ये statement क्या होगा? False होगा, है ना? Option D is correct. Solve this question. आई एम स्टार्टिंग पोल, ठीक है, मैं पोल यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। Determine the maximum length of cable for transmitting the data at the rate 500 Mbps in a Ethernet LAN with frame size is 10,000 bit. Assume that the signal speed is in the cable is 2 lakh kilometer per second.
है ना। तो यहाँ आपको क्या क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ केबल, केबल का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है। डेटा रेट इज गिवन, है ना, बैंडविड्थ इज गिवन 500 mbps ऑन द लैन एंड द फ्रेम साइज इज गिवन। तो यहाँ से आप ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ट्रांसमिशन टाइम आपको मिल जाएगा। एंड वी नो दैट ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू राउंड ट्रिप टाइम, so that better utilization or complete utilization of channel, है ना। ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन राउंड ट्रिप टाइम, ये आपको पता है। नाउ ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द पैकेट, लेंथ ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, okay, divided by bandwidth. It should be greater than equal to, it should be greater than round trip time, that is twice of propagation time, ये भी आपको पता होगा, है ना। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोपेगेशन टाइम, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेगेशन टाइम, इसको तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगी, बट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस द प्रोपेगेशन टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, लाइक यू कैन सी 10,000 बिट, इट इज द साइज ऑफ पैकेट, या जो भी मैसेज आप सेंड कर रहे हो, साइज ऑफ मैसेज कितना है, इन्होंने कहा फ्रेम की मैसेज है का साइज है 1000 बिट्स। अच्छा, अब रेट क्या है, डेटा रेट है 500 mbps, mbps को आप बिट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पहले तो सारी यूनिट को एक सिंगल उसमें लाइए, और फिर उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे, so you will get 2 kilometer, it should will be the distance, so the signal speed in the cable is this, the maximum length it should be up to 2 kilometer, it should be up to 2 kilometer। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, दिस इज फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोहेशन कपलिंग का न्यूमेरिकल है। कोहेशन कपलिंग, यस, ठीक है, करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द लीडर बोर्ड, ठीक है, ये आपका लीडर बोर्ड है, चेक करिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग, इफ
The following figure represent the axis graph of module M1 and M2. The filled circle, it is the methods, and the unfilled circle represent the attributes. है ना? If method M is moved from module M2, keeping the attribute where they are, what can we say about the average cohesion and coupling between the module? So before moving the method, let me check what is the current status of cohesion and coupling. है ना? What is the current station of cohesion and coupling? तो यदि cohesion क्या होता है? Cohesion is इंट्रा रिलेशन बिटवीन द इंट्रा मॉड्यूल, ठीक है, जो आपके जो मॉड्यूल है. कोहेशन, इट इज नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेथड. कोहेशन डिफाइन करता है हाउ स्ट्रांगली इंटरनल मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड, है ना, हाउ स्ट्रांगली इंटरनल मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोहेशन. हम कोहेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला. Cohesion of module is given by number of internal links divided by number of method. So now you can see for module M1, what is the value of cohesion? Number of internal links. You can see count कर सकते हैं इसको 1, 2, 3. Here we have 4, 5, 6, 7, 8. 8 links are there. And number of module, it is 4. So it will become 2. Cohesion for module M1, it is 2. Similarly, cohesion for module 2. Cohesion for module 2 is given by internal link. Only count internal. ये external है. ये आपके external है. ठीक है? Don't count them. इनको count मत करिए. Here we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And number of module methods are 1, 2, 3. So it is 6 upon 3. So cohesion for M2, it is again 2. So average cohesion will be given by 2. ठीक है? This is the pre status. ये पहला status है. Similarly, we can also calculate the coupling. Coupling means the connection between two modules, है ना? It gives the degree of connection between the two modules. So what is coupling means number of external link divided by number of modules. So number of external links, here we have 2 divided by number of module 1 and 2, so it will be 1. So this is average coupling. So this is the pre status. Now what they are saying in the question, ki we have moved, if the method M is moved to module M2, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, है ना, M2. Here you will have the method. So ये लिंक यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी, these two, and these two it will become the external link. ये दोनों क्या बन जाएंगी? External link. So now what is the change क्या होगा? So this will be the new diagram. You can see, ठीक है, ये जैसे ही मेथड यहाँ पर मूव हुआ, so these two will become internal link. Now these are the internal link, and these two will become external link, है ना, ये external link होगा. So now again calculate for the coupling. Again number of external link is 2 divided by module is 2. So coupling is same. Coupling not change, है ना. Coupling पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, so it is not change. And what about the cohesion? So again do the calculation for M1. Number of internal link 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divided by number of method 1, 2, 3. So it will be 2. For module M2, number of internal link 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divided by number of method 1, 2, 3, 4. So it is again 2. So you can answer that there is no change. है ना? There is no change. Got it, everyone? So in the next session, that will be on Monday, we will start with this question. This is from compiler design, है ना, ये compiler design का question है. हम next session में start करेंगे. Any doubt in today's session? Any doubt?
So today we have offer for the complete course that you can enroll the complete course in just rupees 749. So please share this information with your friends, and thank you for your time. Thank you everyone.